Hey everyone, welcome to a brand new and a super fresh episode of the Fisdom Wealthcast. And over here, we are going to explore some super interesting facets of investing with a super interesting guest. Today, with us, we have Ashish Somaya, who is an industry veteran in the asset management field and is one of the most followed asset managers in the country. So, Ashish, a very, very warm welcome to the Fisdom Wealthcast. Thank you, Dino. Thanks for inviting me. सो आशीष विदाउट एनी फर्दर एडू बहुत सारे सवाल है जो आज के टाइम में इन्वेस्टरों के बीच चल रहा है और उनमें गूंज भी रहा है ये सवाल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मेनी इन्वेस्टर्स हैव एंड दे हैव बीन आस्किंग अस from since quite some time now, are we at the right place? And let me elaborate this a little bit more. So काफी इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि इंडिया इज वेरी एक्सपेंसिव टुडे और हाल फिलहाल की जो तेजी है उसे देखते हुए ये जो धारणा है कि इंडिया बहुत एक्सपेंसिव है वो और भी मजबूत होती जा रही है. People are believing that institutional flows are coming to India, especially from foreign countries, also because there are no alternatives as good as India at the moment. It's either just because China is not doing really well and half of the world is embroiled in geopolitical crisis. तो कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए इंडिया को देख रहे हैं. तो देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला एक जो नरेटिव है वो काफी चल रहा है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस का चल रहा है नरेटिव. सो देयर इज दिस एंटायर क्वेश्चन, आर वी इन द राइट प्लेस? इज इंडिया द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट इन? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? See, Nirav, there are many questions in this, so I'll try to do as much, justice और जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ. क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में बहुत पैसा लगा रहे हैं, इनके पास चॉइसेस नहीं है, तो एक वो डायमेंशन है. दूसरा, क्या इंडिया के अलावा ज़्यादा चॉइसेस नहीं है इनके पास, चाइना खराब कर रहा है लेकिन इंडिया बहुत एक्सपेंसिव है, ये दूसरा डायमेंशन है. और तीसरा डायमेंशन ये भी कि भाई इज इट अ राइट प्लेस, इज इंडिया द मार्केट टू बी इन, लंबे अरसे के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें. लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे कवर करने के लिए कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पिछले 2.5 साल से, जुलाई 2021 से लेकर के अभी तक टिल नवंबर 2023 फॉरेन इन्वेस्टर्स का मोटा मोटी तो पैसा निकला ही है. इट्स नॉट दैट दे हैव बीन बिग इन्वेस्टर्स, राइट. एक लगभग 2-3 महीने का पीरियड था मार्च 2023 के बाद अप्रैल में 2023 में, जब थोड़े समय के लिए 15-20 बिलियन पॉजिटिव हुआ था. लेकिन अगर आप कुल मिला के इफ यू सी फ्रॉम जुलाई 2021 टिल नाउ, एफआई फ्लो हैज कंसिस्टेंटली बीन नेगेटिव. नवंबर 2023 के बाद से चेंज हुआ है, बट मोटा मोटी पूरा 2.5 साल नेगेटिव था. एंड ये नेगेटिव इंडिया को लेकर के नहीं था एक्चुअली, इफ यू आस्क मी. ये नेगेटिव होने के 2 कारण थे. एक तो बात यह है कि अगर आप देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2009-10 में, 2008-9 में, उसके बाद से लेकर के 2022 तक 12-13 सालों तक अमेरिका में एक तरीके से तेजी थी. एंटायर पीरियड दे हैड लो इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई लिक्विडिटी एंड वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर देयर इकोनॉमी. नाउ बहुत तेजी होने से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे महंगाई बढ़ती है. और जब कोविड आया तो कोविड भी इनके लिए कोविड भी 1-2 महीने का फिनोमिनन था. उसके बाद तो इन्होंने फिर से और इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और लिक्विडिटी पंप कर दी. तो कुल मिला के ये है कि 12-13 साल तक अमेरिका में तेजी हुई. और इन अमेरिका तेजी मीन्स 12-13 साल मतलब कि अमेरिका का जो जीडीपी आर्थिक व्यवस्था है, जीडीपी एनुअल आउटपुट जो है वो 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर, मतलब अभी तो 24-25 ट्रिलियन होगा, लेकिन कोविड के पहले भी 22 ट्रिलियन था. अब 22 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी 2019 में इनका ग्रोथ 3.5% था. 22 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी जब 3.5% ग्रो करती है तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि 100 टन का ट्रक है, उसको आप 100 माइल पर आवर की स्पीड से हाईवे पे चला रहे हो. और इतनी तेजी होने के बाद महंगाई तो बढ़ती है. अब महंगाई को काबू करने के लिए आप ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो. तो 100 टन के ट्रक को अगर 100 माइल पर आवर की स्पीड से चलाया जाए और फिर उसको रोकने के लिए आप इमरजेंसी में ब्रेक लगाए, कुछ तो होगा, करेक्ट. सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट बिकॉज ऑफ देम अप्लाइंग ब्रेक्स, इंटरेस्ट रेट आप देखिए 2.5 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं लोग. करीब करीब 0 से इन्होंने अपना अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड, 3 महीने पहले अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड 5% देता था. अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड अगर 5% रेट देता है, इसका मतलब है जैसे स्टेट बैंक ने यहाँ पे 12% रेट देने का रेट स्टार्ट कर दिया. सो थिंक ऑफ इट दिस वे दैट बिकॉज यूएस वॉज रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर वॉज अप्रिशिएटिंग. और अगर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है तो रुपया डेप्रिशिएट होएगा. तो अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर के नजरिए से देखिए, अगर लंबे अरसे में साल दर साल सेंसेक्स का कंपाउंडिंग 12% है,
लेकिन किसी एक साल में रुपए का डेप्रिसिएशन 6-7-8% हो जाना है, तो कोई फॉरेनर इंडिया में क्यों पैसा डालेगा? क्योंकि अगर आपका मार्केट का रिटर्न 10-15% है, लेकिन 6-7% अगर रुपया में टूटने वाला है, तो जब रुपया टूट रहा है, दे विल वेट। करेक्ट? So last 2.5 years, FI flow actually was negative, barring some spurts. It was consistently negative. ऐसा actually है नहीं कि FIs have continuously been investing lot of money वगैरह. Yes, it's true कि कोविड के बाद जब आर्थिक व्यवस्था में रिकवरी आई, so our domestic economy and domestic corporate performance has bounced back very very strongly. दूसरी बात, हमारे यहाँ पे लोकली इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे थे, लिक्विडिटी अच्छी थी यहाँ पे, राइट? तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का काफ़ी पैसा लगा, तो हम लोगों को फील नहीं हुआ कि भाई FIs ने 2.5 साल में 50-60 बिलियन डॉलर निकाल लिया, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स का इतना पैसा लगा जैसे EPFO का पैसा लगता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, SIP का, इंश्योरेंस का, NPS का। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी में पैसा बहुत जाना स्टार्ट हो गया। सो आवर मार्केट वॉज स्टेबल डिस्पाइट FIs सेलिंग। सो दैट्स द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। ऐसा कोई FIs ने बहुत डाला नहीं, अभी पिछले 1-1.5 महीने में फिर से स्टार्ट हुआ है। पिछले 1-1.5 महीने में क्यों ट्रेंड चेंज हुआ? क्योंकि अब जाकर के अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से स्लो डाउन या मंदी भी आ सकती है। एंड अल्टीमेटली जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है, दे आर नाउ सेइंग दैट ओके, वी आर डन विथ रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, वी आर गोइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड इवेंचुअली इन अ ईयर फ्रॉम नाउ वी माइट एक्चुअली बी रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स अल्टीमेटली। तो वहाँ पे ब्याज दर घटने से क्या होता है कि डॉलर अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देता है। डॉलर डेप्रिशिएट्स, रुपी अप्रिशिएट्स। तो पहले जो अरिथमेटिक मैंने आपको समझाया पूरा उल्टा हो गया। यस, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ फ्रॉम अ फॉरेनर पर्सपेक्टिव आपका रुपया अप्रिशिएट करने की भी पॉसिबिलिटी अभी रखता है अगर डॉलर डेप्रिशिएट होने वाला है। सो FI फ्लो हैज टर्न्ड ओनली इन द लास्ट 1 month, otherwise it was negative. Second point, why should FI consider investing in India? और इंडिया में इन्वेस्ट करना कंसिडर करना चाहिए, तो लेकिन पहले निकाला क्यों? तो पहले निकाला एक तो डॉलर अप्रिसिएशन की वजह से, दूसरा इंडिया में जितना पैसा आता था वो इमर्जिंग मार्केट या ग्लोबल इक्विटी ऐसे किसी बास्केट में आता, डायरेक्टली इंडिया में पैसा कम आता था। अब ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट का जो बास्केट है उसमें आप देखिए चाइना, सी हाउ चाइना हैज डन। 2021 में अलीबाबा का IPO आने वाला था, इन्होंने जैक मा को गायब कर दिया, राइट? ही वाज आउट ऑफ पब्लिक लाइफ, CEOs चेंज कर दिए, उनका IPO कैंसिल कर दिया, दुनिया भर का प्राइवेट इक्विटी का पैसा लग गया, फिर बोल दिया आप यहाँ पे एडटेक हमको पसंद नहीं है, गेमिंग पसंद नहीं है, यू कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, राइट? Then their COVID impact was very high. Then post-COVID, their bounce back is quite poor. Big real estate developers have defaulted. Real estate market is under stress. The premier has got a third term, which was against actually their constitution or their rules. Correct? So they are becoming more authoritarian and they are becoming more closed. चाइना की वजह से पिछले साल ताइवान 40% डाउन था। फिर इमर्जिंग मार्केट में रशिया आता है, रशिया ने वॉर कर दिया तो उसको इमर्जिंग मार्केट से निकाल दिया। तो ये भी देखिए कि भाई इमर्जिंग मार्केट का जो बास्केट है उसका पिछले 5 साल का रिटर्न नेगेटिव है, चाइना का 5 साल का रिटर्न नेगेटिव है। इमर्जिंग मार्केट में एक भी अगर ब्रिक्स या इमर्जिंग मार्केट में एक भी अगर रिस्पेक्टेबल मार्केट परफॉर्मेंस है तो वो केवल इंडिया में। तो अब क्या हो रहा है कि लोग इमर्जिंग मार्केट का बास्केट में तो यार बहुत सारा ये सब है, मतलब चाइना, ताइवान, टर्की, ब्राजील, रशिया, इमर्जिंग मार्केट के बास्केट में तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं चल रहा है। और ये क्लियर हो गया कि भाई मार्केट चलने के लिए अच्छी व्यवस्था, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीज़ें चाहिए। सो इंडिया इज क्लियरली स्टैंडिंग आउट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, नॉट ओनली दैट बट बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी एंड बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ लॉ। मतलब हमारे यहाँ पे खुद लोग चर्चा करते हैं कि डेमोक्रेसी है कि नहीं है, राइट? लेकिन दूसरों के मुकाबले इट इज रनिंग बेटर, उतना आप बोल दीजिए, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नेवर ब्लैक और वाइट, इट इज ऑलवेज लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, वाइट, इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रे। तो अगर दूसरे लोग डार्क ग्रे जान पड़ते हैं, उसमें आप लाइट ग्रे है तो आपका काम हो जाए। So all these things put together, India is gaining lot of attractiveness, and compared to other emerging markets, we are looking better. We handled economy better, and now the thing in US, interest rates and currency is changing. So now we are going to get huge flows. That is first thing. Second thing, market में है ना flows, मतलब color of money change होने से market में क्या चलता है वो भी change होता है। पहले का नैरेटिव क्या था? मार्केट तो रिटेल इन्वेस्टर और SIP की वजह से चलता है, खाली स्मॉल कैप माइक्रो कैप में पैसा बनता है, लार्ज कैप में क्या रखा है? अभी तो सब ये PSU और सिक्लिकली चलेगा। दिस इज वन नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव क्या है? FI तो पैसा निकाल रहे हैं, लार्ज कैप तो चलता नहीं है। थोड़े दिन पहले ITC के मीम्स बन रहे थे, अभी थोड़े दिन में HDFC के मीम्स बनने वाले थे एक्चुअली, करेक्ट? बट द रियलिटी इज दैट if FI flow which was negative for 2.5 years, if it suddenly become positive,
then all these narratives will get thrown out of the window. Yeah. Right? Because what do foreigners buy here? They'll buy, longevity, sustainability, good cash flows, good governance, free float, domestic economy, domestic growth, the per capita income, the trends, financial services, consumer, pharma, IT, and of course now manufacturing also. So this is the other thing to keep in mind. And last thing, people who say that India is expensive, in all humility, मैं विनम्रता के साथ बोलूंगा वो पढ़ाई नहीं किया है. मतलब इट इज अ लॉट ऑफ इंग्लिश, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी अरिथमेटिक. क्योंकि मैं आपको आई डोंट नो हाउ टू से इट इन सिंपल टर्म्स. जो लोग बोलते हैं इंडिया एक्सपेंसिव है, आप देखिए अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं, आपने फाइनेंस का किताब अगर पढ़ा है तो उसमें लिखा है वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज. राइट. आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं, ईयर 1 में इतना प्रॉफिट, ईयर 2 में इतना प्रॉफिट, ईयर 3 में इतना प्रॉफिट, चौथा साल, पांचवा साल कैश फ्लोज करते हैं और अगले 5, 7, 10 साल का प्रोजेक्शन करके उस फ्यूचर कैश फ्लो की करंट वैल्यू निकालते हैं. तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस का जब वैल्यू होता है तो उसके फ्यूचर का अनुमान किया जाता है और फ्यूचर में जितना कैश फ्लो आएगा उसकी करंट वैल्यू निकालते हैं हम. करेक्ट. तो जब आप फ्यूचर में कितने कैश फ्लो आएंगे उसकी करंट वैल्यू जब निकालते हैं तो उसका इम्प्लिसिट मतलब ये है कि इसका फ्यूचर तो होना चाहिए ना. जहां पे प्रमोटर को गायब किया जा सकता है उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे करेंगे आप? व्हाट हैपेंस इज दैट, जो लोग ऐसे हल्के में बोलते थे ना डी रेटिंग, इसका पी गिर गया, डी रेटिंग हो गया. तो कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स है, हमारा नेबर भी है, कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स है जिनका पी डी रेटिंग हो गया. अब ये डी रेटिंग जो है ना, ये बहुत साधारण सा वर्ड लगता है, लेकिन डी रेटिंग का मतलब ये है कि भाई मुझे तुम्हारा फ्यूचर नहीं दिखता है अभी, तुम ऐसा कुछ करो कि हमको तुम्हारा फ्यूचर दिखे. राइट. दैट इज व्हाट, इट्स अ सीरियस थिंग. If you say that for many sectors my policies have changed, if you say that for that I can put a promoter under house arrest, right? Anybody who challenges the government can be disappeared. That is very scary for investors. Yes. और ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं हुआ. देखिए इंडिया में 2010, 11, 12 में बहुत डी रेटिंग हुआ था. क्या हुआ? हमने एक टेलीकॉम कंपनी का स्टेक सेल हुआ सिंगापुर में, इंडिया के बाहर का ट्रांजैक्शन है. उसको हमने बोला नहीं तुमको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा. बोले तुम्हारे रूल में ऐसा कुछ नहीं. अच्छा रूल में नहीं है, ठीक है हम रूल बदल देंगे. वो दैट वाज वेरी, तो उसमें डी रेटिंग होता है. राइट. फिर हमने एक कंपनी के ऊपर $1 बिलियन का टैक्स लगा दिया. राइट. अभी लेकिन आप देखिए पिछले 4-5 साल में हमने उसका, वो जो कंपनी को हमने 1 बिलियन चार्ज किया था उसको हमने 1 बिलियन रिफंड कर दिया. रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स था उसको हमने हटा दिया. हमारी गवर्नमेंट जो है पिछले 5 साल में बहुत मेहनत कर रही है कि री रेटिंग हो. जैसे अगर आप टैक्स का रेट काटते हो, अगर आप ये सब खराब जो टैक्सेशन के रूल्स है वो हटा देते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव करते हो, आप एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हो, आप अपने पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जीएसटी लाते हो, राइट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हो. व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स यू आर गिविंग पीपल विजिबिलिटी ऑफ अ गुड फ्यूचर. व्हेन यू डू द ऑपोजिट यू आर मेकिंग इन्वेस्टर्स बिलीव भाई तुम किसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो कर रहे हो, इसका तो फ्यूचर ही नहीं. अरे, और यहाँ पे एक दूसरा है कि भाई इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कोई मतलब है क्योंकि इसका फ्यूचर तो हमने सोचा उससे भी ब्राइटर बनता जा रहा है. तो देखिए जो बाहर से पैसा आता है, जो भी लिक्विडिटी आती है, वो भी किसी के सिर पे कनपट्टे पे बंदूक रखा के तो बोल नहीं रहा ना कि भाई तुमको इंडिया में पैसा डालने का तुम्हारे पास चॉइस नहीं है. तो 195 कंट्रीज है यार. 195 कंट्रीज में कितने लोगों का ब्राइट फ्यूचर है, कितने लोगों का जीडीपी 4 ट्रिलियन है, कितने लोगों का जीडीपी 4 ट्रिलियन होने के ऊपर 7% ग्रो कर रहा है. 4 ट्रिलियन के ऊपर अगर आप 7% ग्रो करेंगे तो $250 से $300 बिलियन का आउटपुट आपका एक साल का बढ़ेगा. वो पाकिस्तान का पूरा जीडीपी से बढ़ा है. तो $250 से $300 बिलियन का आउटपुट क्रिएट करने के लिए हाउ मेनी पीपल विल गेट जॉब्स, हाउ मच टैक्स गवर्नमेंट विल कलेक्ट, हाउ मच स्टील, सीमेंट एंड पावर विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच लॉजिस्टिक्स इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी डन, how many Teslas will be sold and how many Apples will be sold. Correct. These are the things which are driving people to come in, right? Just because there is liquidity and market is going up, that's a lazy explanation. Liquidity is never at gunpoint. Liquidity going somewhere because of a reason. Absolutely. I feel कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ये explain किया and the anecdotes, analogies that you shared, I feel it was amazing and puts just so many things into context.
राइट। एंड ये जो एक हमने एक एक्सपेंसिव वाली एक बात करी थी, उससे ही थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, राइट, ऑन द नरेटिव दैट इंडिया इज एक्सपेंसिव, आई विल बिल्ड अपॉन इट फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज आर वी एट द राइट टाइम? अब ये तो तय हो चुका है कि हम सही जगह पर है, इंडिया इज द प्लेस टू बी, बट इज दिस द राइट टाइम टू बी इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया? बिकॉज आज देखिए, जैसे एज वी आर स्पीकिंग, मार्केट्स आर स्केलिंग रिकॉर्ड हाइज. As we are speaking, we are entering a year where elections are right around the corner. Of course, there's a lot of concerns. जब भी मार्केट ऊंचाई छूती है, तभी नर्वसनेस जो होती है वो काफी पैल्पेबल सी हो जाती है, और उसके साथ ही साथ जब भी इलेक्शंस भी एक इस मिक्स में एड अप हो जाती है, तब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंग्जाइटी, नर्वसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो दो किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, और दोनों किस्म के इन्वेस्टर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत ही वरीड से रहते हैं. एक इन्वेस्टर होता है जिन्हें इन्वेस्ट करना है, जिनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि इस लेवल पर, इलेक्शन के आते हुए, मार्केट हाइस पर, इस मोड पर क्या इन्वेस्ट करूं या ना करूं, और करूं तो कहाँ करूं, राइट? और दूसरे किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो सोच रहे हैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है मार्केट, इज दिस द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स? Will the dust settle at some point? Is this euphoria? Is this froth? So in any case, whether you are an investor from on the outside or you're an investor on the field, you are still nervous and anxious at the same time. So is this the right time? What's your take on that? See, I'll say this right time, in two dimensions. One is very long term, and one is जो आपने अभी बोला here and now. Correct. तो long term dimension इसका ये है कि कैरिंग फॉरवर्ड, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के जो रिस्पॉन्सेज दिए उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, दैट द वर्ल्ड नीड्स ग्रोथ. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर और हाउ मेनी places are there where you have 4 trillion GDP with 7% growth. Correct. So, and in our country nowadays, for example, somebody has made a statement that it is impossible we will reach 5 trillion by 2025. I find it to be a very futile debate, because you tell me how many countries are going to reach 5 trillion. There are only 3 countries which ever reach 5 trillion. The fourth one is going to be us. So we might do it 6 months early or 6 months late. I mean, why will I lose sleep over it? It's nice to have political debates or put statements in media, but otherwise it is irrelevant. It's a one horse race. Whether you want to run faster or slower, it's up to you. There are nobody else who is going to reach 5 trillion. Yes, it's a different thing that for us reaching 5 trillion and 6 trillion and 10 trillion is very important, because we have 140 crore people. And unless the GDP doesn't cross all those milestones, the per capita income also will not rise. So I think for us, it's more about prosperity of people at large. And we should be happy that we are in a country which can go to 5 trillion and 7 trillion and 8 trillion, whatever, 6 months here and there. I think it matters to the less endowed people in the country, because how fast we scale, that much the per capita income potentially and job creation can go up. So it is important, but at the same time, we should be happy instead of indulging in futile debates. Second important thing is that if you ask me, right time, right place का जो मैंने बोला, क्योंकि you see Warren Buffett, for example, is the most famous investor in the world. Yeah. Often, he is asked that, Mr. Buffett, what is the secret of your success? And you must have heard he gives, basically, directly, indirectly, he says that I am successful because I was born in America in 1930. Basically means that 40s and 50s and 60s was probably his schooling, college, and, education. And, 60s, 70s, and 80s. And through the 90s, his career actually progressed as a investor of great repute. And his investment career coincided with America becoming an economic powerhouse, after the Second World War. So such a great man says that he's successful because he was at the right place at the right time. Correct. And, one can say with reasonable confidence that if you're investing in India's markets in the 2020s, 30s, and the 40s, then all of us are lucky, we are in the right place at the right time. It also, one should notice that, Mr. Buffett is just being humble, because everybody born in America in 1930 did not become Mr. Buffett. America created a lot of rich people, and, they have definitely much better per capita income and a bigger economy, and, population also matters. All those things matter. But the reality is that everybody born in America in 1930 is not Mr. Buffett. So it means you have to do the right things also, not just be the right place at the right time. If you find yourself there, it is incumbent upon you to do the right things. Now, if you see in India, after liberalization from 1991 till date, the nominal GDP has compounded 12 to 13%. Sensex earnings have compounded 12 to 13%.
And the Sensex itself has compounded 12 to 13%. If you add dividend yield, it will be a little bit more. So in a market, if you are in an economy where the underlying market is growing 13-14% and doubling every 5 to 6 years. So if the market is doubling every 5 to 6 years, then what more you need to do? Correct? You just need to, in cricketing parlance, you would say that, stay on the pitch, take singles, rotate the strike, don't lose your wicket and bat the whole 50 overs. So all of us, we just need to remain invested. There's nothing else that we need to do. Now, what prevents us from remaining invested is actually the question you asked, that now we are at all-time high. What if market falls? If I'm already invested, should I remove? Should I put in more money? So let me tell you, boss, every 18 to 20 months market makes a new high. Correct. Reality. अभी 1991 से लेकर 2023 12-13% अगर 14% हर साल कंपाउंड किया है, तो भाई हर 18 से 20 महीने में न्यू हाई बना है ना. It makes a life high every alternate year. Yes. See, right now as we speak, the life high is some 21,200 out of the Nifty. Yes. Last year, November 2022, it was 18,900. In October 2021, it was 18,490. Before that, in November 2020, it breached the previous high of 12,490. Before that, Jan 2018, I think new high was 11,000 plus something. So market makes a new high I can tell you 3 things to keep in mind. Market makes a new high every 18 to 20 months. Every year, once the market falls 15-20% from its peak. And every year, once the market rises 15-20% from its bottom. This happens every year. It's just a circus. But in the long run, index plus dividend yield in the long run compounds 14% year on. So basically, you just need to stay invested. You don't need to do anything. Like I always tell people that where work can be done with discipline, please don't show talent. That is the thing to keep in mind. Correct. Absolutely. In fact, you just put these two pieces so beautifully together. We are at the right place. We are in the right time. What's more important is to stay the course. अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, if you are in a ship that is destined to hit the shore, उतार चढ़ाव होता रहेगा, storms आएंगे, but you just need to cling on to it, right? I'll use one anecdote which is very touchy topic right now, but it will still drive the point. Recently the World Cup got over. Correct. We won 10 matches on the trot. We deserve to win the World Cup. 10 matches on the trot. The 11th match also, by the way, the opposition was 47 for 3. And they had to go all the way to 241. Yes. 242. So 10 matches we won. Final में भी हमने उनका 47 for 3 तो कर ही दिया था. मतलब a good chance that we could have still won. But how did the opposition win? Singles rotated the strike. They didn't lose a wicket. And they ensured they batted till the last over. वो 47 for 3 होने के बाद अगर वो लोग चौके छक्के मारने का ट्राई करते, उनका विकेट गिरता और वो लोग पूरा 50 ओवर नहीं खेलते तो हम लोग जीत जाते. Yes. Same applies to the market, no? Like अच्छा अभी 21,200 है, अभी मैं निकल जाता हूँ. अभी मैं 19,000 का इंतजार करूंगा. फिर 19,000 तो आएगा नहीं, तो मैं 23,000 में एंटर करूंगा. फिर मैं 23 में एंटर करूंगा, उसके बाद गिर के 21 पे आएगा. So, the market makes a monkey out of people who make forecasts. So it's just better that, you remain invested. That is why I said, like for example, in our firm, we don't say for SIP, we say stay in play. That's the point. Our market is like that. You have to just stay in play, stay on the pitch. Don't do anything where, you will get thrown out. Correct. More than anything else, it's a test of discipline, endurance, right? You just got to endure the cycles at the end of the day. So wonderful, Ashish, right place, right time. I feel it'll bring it to a very good and complete close if I ask you the third and final question, which is what is the right thing to do? So being in the right place and at the right time could be a matter of happenstance, but the third vector is in our hands, right? What do we do once we are in the right place and the right time? So what are those few, pieces of advice that you'd like to give to investors today? So I'll again, I think the cricketing example maybe partly answers your question, but I'll tell you another anecdote. If I did, Nirav, we go to the cinema halls, we go to the airport, we go to a mall, and, we find escalator, right? There are these escalators. If I ask you a simple pedestrian question, pun intended, what do you need to do to go up on an escalator? What do you need to do to go up on an escalator? Just be on the escalator, stand on it. Basically, so somebody gave me a very perfect answer. He said, stand on the escalator, take the first step, hold on to the guardrail so that you don't fall, and make sure you don't move till you reach the top. Correct?
Now, if somebody asks you that, okay, Nirav, the escalator has gone up, but मैं ऊपर नहीं पहुंचा, what does it mean? And did not take this. It means बहुत talented है ना, मतलब बॉस escalator, मतलब तुम ऊपर कैसे नहीं पहुंचे, मतलब you have to be extremely talented not to go up with it. So if the whole escalator is going up, how do you go up? You just stand there, hold the railing and stand there. Don't monkey around. Don't do anything unnecessary. Don't try to go faster. Don't try to go in an escalator with your shoelaces untied. All those kinds of things. Correct? So that's the thing. What people need to do, say there are advisors like you, you do research. You tell people, which funds, how to invest. So I think take advice of whoever you trust and then remain invested. You just have to invest in diversified equity funds. Keep investing regularly and keep invested as long as you can. Right? Don't try to do more than what is actually, this is all that is required. I mean, the problem happens when people overthink it. Correct. I feel one very important takeaway, and this is for the first time I'm hearing it, but it has stuck to me. Don't monkey around. That is a wonderful and golden piece of advice there. If it's not required, don't. Yeah. Like there is one very, as somebody in the market, quite a veteran, I respect him a lot. उनको किसी ने पूछा था कि सर अभी मार्केट में से कभी निकलने का, ये स्टॉक कभी बेचने का, ऐसे सब क्वेश्चंस केम. तो इसे चलती हुई गाड़ी का बोनेट नहीं खोलने का. Right. So that is the whole point. Absolutely. That's absolutely right. So Ashish, I feel this was such a nice, well-rounded conversation. This puts so many things into context. और दोनों ही नजरिए से, right? In the shorter term, how do we approach life, and in the longer term, and about the most important aspects of investing, right? So the most important thing that we realize is don't worry about being in the right place, right time. Most of us are fortunate we are already in the right place and the right time. Just focus on the right things to do. और वो भी कोई rocket science नहीं है. Just don't monkey around. I feel that's the best way to tie it in a neat little ribbon out there. So thanks a lot, Ashish. It has been wonderful chatting. And as always, there's so much that we got to learn from you. I will be leaving a much wiser man than what I started with. Thank you, Ashish. Thank you. All the best. Thank you.